behind me, well, is it a 40 feet Christmas tree? Absolutely. लेकिन ये themed है in terms of a toy factory. यानी कि क्रिसमस ट्री के साथ साथ आपको एक टॉय फैक्ट्री भी बड़ी ब्यूटीफुली देखने को मिलेगी. तो किस बात का इंतज़ार है? इस टेडीज वाले थीम पर बेस्ड टॉय फैक्ट्री को चलिए एक्सप्लोर करते हैं. कम विद मी. हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये क्रिसमस ट्री जो है ना इस तरीके से डेकोरेट होता है. ये इसका ट्रेडिशनल वे होता है. लेकिन आपको बता दूं कि और भी काफ़ी सारी चीज़ों से इसे डेकोरेट किया जाता है, जैसे कि सस्टेनेबल मटेरियल्स. और आप मेरे पीछे ये थीम भी देख सकते हैं. पूरा टॉय फैक्ट्री थीम है, यानी कि टेडी बियर्स एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स एंड अमेजिंग थिंग्स फॉर चिल्ड्रन. This here is little Janvi and she's here with me. I'll be helping her making a cute sa ginger cookie. So we'll make it together. Okay, Janvi? See, 1, 2. We'll decorate the star. Okay, we made it. I think we did something. Okay. So now, would you like to decorate it with jams? We could put it on the side. इस पे रख दो. इस पे रख. Yes. Wow, that's great. ये last एक और. Wow! I'm so proud of you. Thank you, Janvi. You're such a cute kid. So that was it with Janvi. She's a lovely kid, although she did not speak much. But you guys can look at the masterpiece that she created with this gingerbread. Really pretty. Guys, अगर आपको लगा हमारा सफर यहीं तक था, then boss you're wrong, because right now I'm at this beautiful flea market जहाँ पर आपको home decor से लेके, you know, your फैशन, आपका लाइफस्टाइल का जितना भी नीड्स है, एमिनिटीज़ है, वो सब इधर कंप्लीट हो जाएगी. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट फूड. मेरे पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कुटूर शॉप है. यू कैन सी काफ़ी प्यारी कलेक्शन इनकी यार. आई कैन सी दिस बंद गलास एंड दे आर वेरी इंटीग्रेटली डिजाइंड. सो क्या प्राइसिंग है इन सब चीज़ों की? 6500 फॉर अ पीस लाइक दिस. आई थिंक दैट्स क्वाइट, आई वुड से अफोर्डेबल. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि इसकी पर क्या कारीगरी करी हुई है. टर्किश वेलवेट है. टर्किश वेलवेट पे ये कारीगरी की गई है श्रीनगर में. क्या बात है, ब्यूटीफुल. आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी ब्यूटीफुल स्टॉल है. आप इसे चेकआउट भी कर सकते हैं, यू नो, बाय कमिंग हियर. एंड लेट्स मूव ऑन. वी हैव सम क्रॉकरी एज वेल. दिस इज अ लॉट ऑफ होम डेकोर. अगर आप अपने घर के लिए यू नो यू वांट टू बाय सम क्यूट टी सेट्स और मे बी सम क्रॉकरी, देन दिस इज योर गो टू प्लेस. डू चेक इट आउट. इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल. लुक एट दीज कलर्स. ब्यूटीफुल. Let's move on. So we are at this really beautiful and aesthetic stall जहाँ पर मुझे ढेर सारा गोल्ड एंड प्लैटिनम और ये अलादीन का चिराग भी दिख रहा है यार. इसको अगर घिसेंगे तो क्या वाकई हमारी विशेस यू नो दे विल कम ट्रू? विल हैव टू आस्क. एनीवेज, जोक्स असाइड, इसके अलावा आप यहाँ पर जो है जितना भी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए मटेरियल है, लाइक द स्पीकिंग ट्री, शंक्स, यू नो, इवन दिस बैलगाड़ी, आप इसको घर ले जा सकते हैं. ओह, टेक्निकली इट्स नॉट अ बैलगाड़ी, इट्स अ हॉर्स. या So let's move on. Quite intriguing. So we have some fragrances as well. Quite pretty stall. काफ़ी beautiful, अलग-अलग तरीके की colorful fragrances मुझे देखने को मिल रही हैं. And a lot of skincare as well, as the lady said. So do check this stall out. Since we have a lot of time, I would also love to, you know, just. Roll-ons for healing. Oh, for healing. This is something really new. Please let me know what that is. This is for headache. Okay. And this we have something for pimples. Now with the season, we have seasonal allergy. Oh. We take care of cold and all, even sinus. So we cure with essential oils. So they cure with essential oils, with, you know, your everything related from your pimples to your sinus to whatever you are feeling in this cold weather. I think they have the solution for that, so you should definitely check out their store. Let's move on. That's so cool, man. Like you can see, they have a lot of you know, rubber bands. They have a lot of keychains. Yeah. Oh, look at this. Damn. This is not something you find on regular basis. Come and check their stall out, you know, look at these sneakers as well. They seem pretty cool, especially Gen Z is going to love it. This is very Gen Z coded. And I'm pretty sure the price is also affordable. And look at the deals, man. You're getting the best out of all the worlds. बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई.
एक चीज़ in particular that I found really intriguing is this stall. At first I could not make out what it was, and then this gentleman here told me that these are supposedly helmets for when you ride your bicycles. Am I right? Exactly. Yeah. These are the lightest and the coolest cycling and skating helmets for your kids. I'm yeah. Just expect me doing this anywhere. Yeah. So I think I'm out on my biking adventure, guys. Bye bye, tata. I'm more cooler than you now. So we have a lot of jewelry here. You can see, you know, for pretty girls we have pretty jewelry. Let's move on, since we saw a lot of, you know, stuff that is there in the flea market, from sorts of dry fruits that you can give for gifting, and then we haven't checked out the food stalls yet. तो खाना एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे पहले चेक आउट करनी चाहिए, क्योंकि I am a foodie. So come with me. So we have this Master Chow stall. I'm seeing a lot of, you know, French fries and oh, are these peri peri, and a lot of, you know, paneer. I'm loving it. So what is the theme about? Is it all Korean and everything? Yeah, all Korean. So is it guaranteed that I will go home today with a very spicy mouth if I try any of these? Yeah, it will. Wow, that's great. So you can come check out their stall. बहुत सारी hot sauces भी हैं इधर. मतलब your mouth is going to run dry in a good way. So you can see the hot making of the ramen, and you know these two beautiful women who are working on it on the stall. So ये भी सारा Korean theme base है आपका stall. So क्या कर रहे हो आजकल? सबका मुंह जला के भेज रहे हो? इतना spicy होता है ये तो? नहीं, इतना नहीं होता. इतना नहीं होता? चलो देव से इतना नहीं होता तो you gotta try it, guys. Do check out their cool stall. And yeah, that was all for this video. If you like this flea market, do visit it. I personally really enjoyed it. Lots of cool things, actually intriguing things for you to shop at. So if you like this video, don't forget to like and subscribe our channel Trends9. Bye bye.